Hello everyone and welcome back to our channel Biology Impulse. Today in this session we will discuss about the chapter number 12 of class 11th, that is mineral nutrition. Here we will discuss about some of the very important MCQs regarding this chapter that are important from the NEET and AIIMS point of view. So without wasting any time, let's proceed with our today's session. The very first question is, during the biological nitrogen fixation, the inactivation of the nitrogenase by the oxygen poisoning prevented by. The correct answer to this question is option number B, that is hemoglobin. So normally during biological nitrogen fixation, the inactivation of the nitrogenase by the oxygen poisoning is prevented by the leghemoglobin. It is a red pigment that is felt outside the peribacteroid space in the cytosol of the nodule cell. It has the ability to combine very rapidly with the oxygen and thus act as an efficient oxygen scavenger. यानी कि जो बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन के टाइम पे जो नाइट्रोजनेज का इनएक्टिवेशन होता है वो नॉर्मली उसको रोका जा सकता है लेग हीमोग्लोबिन की मदद से. ये जो लेग हीमोग्लोबिन है ये एक रेड कलर का पिगमेंट होता है जो कि साइटोसॉल में प्रेजेंट होता है नोड्यूल सेल्स के, और इसके पास एक ऐसी एक्टिविटी या एबिलिटी प्रेजेंट होती है जिसकी वजह से ये ऑक्सीजन के साथ बहुत रैपिडली कंबाइन कर सकता है और ये एक बहुत ही एफिशिएंट ऑक्सीजन स्कैवेंजर के जैसे काम भी कर सकता है. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द विच ऑफ द फॉलोइंग इज एसेंशियल फॉर द ग्रोथ ऑफ द रूट टिप. द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर ए, दैट इज कैल्शियम. द कैल्शियम इज एसेंशियल फॉर द ग्रोथ ऑफ द रूट टिप. The calcium is present in the cell wall in the form of calcium pactate. It helps in holding the plant cell together and for growing new cells. The plant derives its calcium from the soil, which is transported to the different part for the utilization. The calcium also plays a very important ion that helps in performing many other cellular functions as well. Hence, when the calcium is deficient, new plant tissues like the root tip, new shoots and their leaves do not form or stop growing due to the improper cell wall formation. यानी कि जो कैल्शियम है वो एक बहुत ही ज़रूरी एलिमेंट होता है रूट टिप के ग्रोथ के लिए. जो कैल्शियम है वो नॉर्मली सेल वॉल में प्रेजेंट होता है कैल्शियम पैक्टेट की फॉर्म में, और ये प्लांट के सेल्स को एक साथ होल्ड करने में और नई नई जो सेल्स है उनको ग्रो करवाने में मदद करवाता है. अब ये जो प्लांट है इसको कैल्शियम मिलता है सॉइल से और फिर इसको प्लांट के बॉडी के अंदर अलग अलग पार्ट्स में ट्रांसफ़र करवा दिया जाता है इसके यूटिलाइजेशन के लिए. इसके अलावा जो कैल्शियम है ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है जो बाकी के सेल्यूलर फंक्शन हो रहे थे उनके अंदर भी. इसीलिए अगर किसी सेल के अंदर या किसी प्लांट के अंदर कैल्शियम डेफिशिएंट है तो उस प्लांट के अंदर जो न्यू टिश्यूज़ फॉर्मेशन होंगी, जैसे कि रूट टिप बनेगी, न्यू शूट बनेगी या फिर लीव्स बनेंगी, तो उनके अंदर जो अच्छे से फॉर्मेशन नहीं होगी और उनकी ग्रोथ भी स्टॉप हो जाएगी क्योंकि वहाँ पे ढंग से सेल वॉल फॉर्मेशन नहीं हो पाएगा. Therefore, the correct answer is option number A, that is calcium. The next question is, the first stable product of the fixation of atmospheric nitrogen in the leguminous plant is. The correct answer to this question is option number B, that is ammonia. The root nodules of the leguminous plant harbors the nitrogen fixing bacteria which has the nitrogenase enzyme. The free nitrogen gas is reduced to the ammonium ions in a multi-step reaction catalyzed by the bacterial nitrogenase enzyme. So, the correct answer is ammonia. यानी कि जो रूट नोड्यूल्स होती हैं लेग्यूमिनस प्लांट के उसके अंदर जो नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरियाज हैं वो प्रेजेंट होते हैं और इन नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरियाज के पास में नाइट्रोजनेज एंजाइम प्रेजेंट होते हैं और ये इसी एंजाइम की मदद से जो फ्री नाइट्रोजन है उसको अमोनिया के अंदर कन्वर्ट करवा देते हैं इस एंजाइम की मदद से. सो द करेक्ट आंसर इज अमोनिया. The next question is, the most abundant intracellular cation is. The correct answer to this question is option number D, that is potassium. The potassium ions are the main cations in the intracellular fluids. They contribute to the transmission of the nerve impulse and the muscular contraction. The plant also need the potassium for the stomatal opening and closing activities in which they absorb the energy from the sunlight through the process of photosynthesis and transports from the epidermal cells to the guard cells for the opening. The plant also needs the nutrient for the healthy growth. The carbon dioxide is obtained from the air. Inorganic ions are obtained from the soil where they are dissolved in the water. The three ions that are required in the highest amount are the nitrate, phosphate and the potassium.
The source of the nitrogen, phosphorus and potassium are respectively. The smaller amount of the magnesium, calcium and some other ions are also required. यानी कि जो पोटेशियम आयन्स है वो बहुत ही ज़रूरी केटायन होते हैं इंट्रासेल्युलर फ्लूइड के अंदर, और ये जो नर्व इम्पल्स का जो ट्रांसमिशन होता है उसके अंदर मदद करवाते हैं, और उसके साथ साथ जो मसल कॉन्ट्रैक्शन होता है उसके अंदर भी एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं. इसके अलावा जो प्लांट हैं उनको पोटेशियम आयन्स की ज़रूरत पड़ती है स्टोमेटल ओपनिंग एंड क्लोजिंग के लिए, जिसके अंदर वो जो सनलाइट एनर्जी है उसको ट्रैप करते हैं और फिर उसका इस्तेमाल किया जाता है फोटोसिंथेसिस का. और इसके अलावा जो एपिडर्मल से लेके जो गार्ड सेल के अंदर जो चीज़ों का ट्रांसपोर्ट होता है उसके लिए भी उनको पोटेशियम आयन्स की ज़रूरत पड़ती है. और इसके अलावा भी प्लांट को और भी सारे न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत पड़ती है हेल्दी ग्रोथ के लिए. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द मिनरल नोन टू बी रिक्वायर्ड इन अ लार्ज अमाउंट फॉर द प्लांट ग्रोथ इंक्लूड्स. द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर बी, दैट इज phosphorus, potassium, sulfur and calcium. The primary macronutrients that are nitrogen, phosphorus, potassium and the three secondary macronutrients that are calcium, sulfur, magnesium are very important for the plant growth. Therefore, the correct answer is option number B. यानी कि प्लांट को फॉस्फोरस, पोटेशियम और सल्फर, कैल्शियम आयंस की ज़रूरत पड़ती है लार्ज अमाउंट में, और जिन न्यूट्रिएंट्स की हमको बहुत लार्ज अमाउंट में ज़रूरत पड़ती है उनको हम बोलते हैं मैक्रोन्यूट्रिएंट्स. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज deficiency symptoms of the nitrogen and potassium are first visible in. The correct answer to this question is option number C, that is senescent leaves, यानी कि old leaves. The deficiency of the potassium normally in the plant is first visible in the leaves. They started turning yellow and brown scratches are also seen. Similarly, the first symptom of the nitrogen deficiency in the plant are also observed in the yellowing of the leaves. This is because the plant are unable to make enough chlorophyll and hence started appearing pale green or yellow. So the correct answer is senescent leaves. यानी कि जो अगर पोटेशियम की डेफिशिएंसी हो रही है या कमी हो रही है प्लांट के अंदर तो वो सबसे पहले विजिबल होगी लीव्स के अंदर. लीव्स जो है वो येलो या फिर ब्राउन कलर की टर्न होने लग जाएंगी. सिमिलरली जो पहला सिम्टम होगा नाइट्रोजन डेफिशिएंसी का वो भी प्लांट के अंदर लीव्स के अंदर ही देखने को मिलता है, क्योंकि वहाँ पे भी जो लीव्स हैं वो येलो कलर की होने लगती हैं. इसका मेन रीज़न ये है कि जो प्लांट वो इनफ क्लोरोफिल नहीं बना पा रहा है और इसी वजह से उसका अपीयरेंस ग्रीन या येलो से के अंदर चेंज होने लग जाता है धीरे धीरे. देयरफॉर द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज कॉपर इज द एक्टिवेटर ऑफ एंजाइम. द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर बी, दैट इज tryptophan. Some enzymes requires the metal ion for their activity. The tyrosinase is a copper-containing enzyme that catalyzes the production of melanin and other pigments. Therefore, the correct answer to this question is option number D, not option number B. यानी कि कुछ एंजाइम्स हैं जो कि जिनकी ज़रूरत पड़ती है मेटल आयंस को, उनकी ज़रूरत पड़ती है उनकी ढंग से एक्टिविटी होने के लिए. और जो टायरोसिनेज है ये कॉपर कंटेनिंग एंजाइम होता है जो कि मेलानिन का जो प्रोडक्शन है उसको कैटलाइज करवाता है. देयरफॉर द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी. The next question is, most of the plant obtain the nitrogen from the soil in the form of. The correct answer to this question is option number D, that is nitrates. The most abundant gas in the atmosphere is nitrogen, but it is very stable form and can't be used by the plant directly. So most of the plant absorb nitrogen from the soil as the nitrate and then internally convert it to the nitrites and the ammonium form. The process of the conversion of the nitrate to the ammonium form in the plant is called as the nitrate assimilation. Therefore, the correct answer is option number D. यानी कि जो हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर जो सबसे ज़्यादा अबंडेंट गैस है वो है नाइट्रोजन, लेकिन ये अपनी एक बहुत ही स्टेबल फॉर्म में होती है, इसीलिए प्लांट उसको डायरेक्टली एब्जॉर्ब नहीं कर सकते हैं. तो जो मोस्ट प्लांट क्या करेंगे कि वो जो सॉइल है उससे नाइट्रोजन को एब्जॉर्ब करेंगे इन द फॉर्म ऑफ नाइट्रेट और फिर उसको नाइट्राइट और अमोनियम आयंस के अंदर कन्वर्ट करेंगे. तो ये जो कन्वर्जन होता है नाइट्रेट का अमोनियम के अंदर इसको हम बोलते हैं नाइट्रेट असिमिलेशन, और इसीलिए जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द leghemoglobin is formed for. The correct answer to this question is option number C, that is nitrogen fixation. The root nodule of the leguminous plant contains an oxygen binding hem protein called as the leghemoglobin. The leghemoglobin is present in the cytoplasm of the infected nodule cell at the high concentration.
This leghemoglobin has the high affinity for the oxygen, approximately 10 times higher than the beta chain of human globulin, and the function of the leghemoglobin is to help the transport of oxygen to the respiring symbiotic bacterial cells in the manner analogous to the hemoglobin transporting oxygen to respiring tissue in the animals, which help in the fixation of nitrogen. Therefore, the correct answer is option number C, that is nitrogen fixation. यानी कि जो रूट नोड्यूल्स होती हैं लेग्यूमिनस प्लांट की, उनके पास एक हीम प्रोटीन प्रेजेंट होता है जो कि ऑक्सीजन बाइंडिंग प्रोटीन है, जिसको हम लेग हीमोग्लोबिन बोलते हैं. ये जो लेग हीमोग्लोबिन है ये नॉर्मली काफ़ी ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन में प्रेजेंट होता है इन्फेक्टेड जो नोड्यूल है उसके साइटोप्लाज्म के अंदर. अब ये जो लेग हीमोग्लोबिन है इसके साथ ऑक्सीजन की जो बाइंडिंग एफिनिटी है वो बहुत ज़्यादा होती है, और ये जो लेग हीमोग्लोबिन है ये इसका फंक्शन होता है कि ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट करवाता है सिम्बायोटिक बैक्टीरियल सेल्स तक, और अल्टीमेटली इसी तरीके से नाइट्रोजन फिक्सिंग के अंदर भी मदद करवाते हैं. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाइड्रोपोनिसिस इज. द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर सी, दैट इज soilless cultivation of the plant. The hydroponics is the cultivation of the plant without the using soil. The hydroponics flower, herbs and the vegetables are planted in the insert growing media and supplied with the nutrient-rich solution, oxygen and water. This system fosters the rapid growth, stronger yield and the superior quality as well. यानी कि जो हाइड्रोपोनिसिस है वो एक ऐसी टेक्निक है जिसके अंदर प्लांट को कल्टीवेट किया जाता है विदाउट द यूज़ ऑफ सॉइल. जो हाइड्रोपोनिसिस की टेक्निक है उससे बहुत सारी जो फ्लावर्स हैं, जो वेजिटेबल्स हैं, उनको प्लांट किया जाता है ऐसे मीडिया के अंदर, आर्टिफिशियल कंडीशंस के अंदर, और उस मीडिया के अंदर जितने भी जो न्यूट्रिएंट्स वगैरह की रिक्वायरमेंट होती है या ऑक्सीजन की या वाटर की रिक्वायरमेंट होती है प्लांट को ग्रोथ के लिए, उनको वो सारी चीज़ें सप्लाई करी जाती हैं. और इस जो हाइड्रोपोनिसिस की टेक्निक से जो प्लांट ग्रोथ है वो बहुत रैपिडली होती है, उसकी जो यील्ड होती है वो भी ज़्यादा होती है, और जो क्वालिटी आती है वो भी काफ़ी सुपीरियर क्वालिटी आती है एज कम्पेयर टू नॉर्मल वंस. सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच इज़ अ फ्री लिविंग नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया. The correct answer to this question is option number B, that is Azotobacter. The Azotobacter species are the free-living nitrogen-fixing bacteria in contrast to the Rhizobium species. They normally fix the molecular nitrogen from the atmosphere without the symbiotic relationship with the plant, although some Azotobacter species are associated with the plant as well. यानी कि जो Azotobacter species हैं वो फ्री लिविंग होते हैं और नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरियाज होते हैं, और ये बिल्कुल उलट होते हैं राइजोबियम बैक्टीरिया से, क्योंकि ये नाइट्रोजन के मॉलिक्यूल्स को फिक्स तो करते हैं एटमॉस्फेयर से लेकिन प्लांट के साथ सिम्बायोटिक एसोसिएशन में नहीं रहते हैं. लेकिन कुछ स्पीशीज़ को देखा गया है एज़ोटोबैक्टर की जो कि प्लांट के साथ भी एसोसिएटेड हो सकती हैं. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द कंपोनेंट ऑफ द नाइट्रोजनेज एंड द नाइट्रेट रिडक्टेज इज. द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर बी, दैट इज मोलिबेडनम. The next question is, the plant require the iron and the magnesium for. The correct answer to this question is option number A, that is for the synthesis of chlorophyll. The magnesium and the irons are essential macronutrients for the plant. The plant require both the iron and magnesium for the synthesis of chlorophyll. The Mg is absorbed by the plant in the form of the divalent magnesium ion, that is Mg2 positive, and it is required for the growing areas of the root and stem, seeds, leaf, etc. It occurs as a magnesium pactate in the middle lamella. It is responsible for the ring structure in chlorophyll. The iron is required in a larger amount in comparison to other macronutrients. The plant obtain the iron in the form of ferric ions, that is Fe3 positive. It is required everywhere in the body of plant. It is essential for the formation of chlorophyll and the other pigments as well. यानी कि जो मैग्नीशियम और जो आयंस है वो दोनों ही एक एसेंशियल मैक्रोन्यूट्रिएंट्स होते हैं जो कि प्लांट के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं. जो प्लांट है उनके लिए आयरन और मैग्नीशियम की ज़रूरत होती है क्लोरोफिल को सिंथेसिस करने के लिए. अब ये जो मैग्नीशियम है ये प्लांट एब्जॉर्ब करता है इसको डाइवेलेंट मैग्नीशियम आयन की फॉर्म में, यानी कि Mg2 पॉजिटिव के फॉर्म में ये इसको एब्जॉर्ब करता है. और मैग्नीशियम की ज़रूरत पड़ती है जो भी ग्रोइंग एरियाज़ होते हैं रूट के, स्टेम के, सीड के या फिर लीव्स के, उनको अच्छे से ग्रो होने के लिए. इसके अलावा मैग्नीशियम की भी ज़रूरत पड़ती है एज ए मैग्नीशियम पैक्टेट जो मिडल लैमेला होता है उसके अंदर. और इसके अलावा जो क्लोरोफिल का रिंग स्ट्रक्चर बनता है उसके लिए भी मैग्नीशियम की ज़रूरत पड़ती है. वहीं अगर हम आयरन की बात करें तो आयरन भी एक बहुत ही लार्ज क्वांटिटी में ज़रूरत पड़ती है प्लांट को.
जो प्लांट है नॉर्मली आयरन को फेरिक आयंस की फॉर्म में एब्जॉर्ब करता है, यानी कि Fe3 पॉजिटिव आयंस की फॉर्म में एब्जॉर्ब करेगा। और ये जो फेरिक आयंस है ये प्लांट को ज़रूरी होते हैं ऑलमोस्ट हर एक बॉडी पार्ट के अंदर, और ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं क्लोरोफिल और जो बाकी वाले पिगमेंट्स हैं उनके फॉर्मेशन के लिए। Therefore, the correct answer is option number A. The next question is, which one helps in the absorption of the phosphorus from the soil by the plant? The correct answer to this question is option number C, that is glomus. The glomus is a endomycorrhizal fungi and helps in to absorb the phosphate from the soil by forming a mutualistic association. It present in those in which the root system is poorly developed. The plant survive because of the mycorrhiza. The endomycorrhiza is a symbiotic association between the root and fungus. Therefore, the correct answer is option number C. यानी कि जो ग्लोमस है ये एक एंडोमाइकोहेजल फंगी है और ये प्लांट को फॉस्फेट एब्जॉर्ब करवाने में मदद करवाती है अपने म्यूचुअल एसोसिएशन के साथ। अब ये नॉर्मली उन प्लांट्स की रूट में प्रेजेंट होती है या वहाँ पे प्रेजेंट होती है जहाँ पे उनका जो रूट सिस्टम है प्लांट का वो अच्छे से डेवलप नहीं होता है, और जो प्लांट है वो इसी माइकोहेजा की मदद से ही सर्वाइव कर पाता है वहाँ पे। ये जो एंडोमाइकोहेजा है ये एक टाइप का सिम्बायोटिक एसोसिएशन होता है रूट और फंगस के बीच में। सिम्बायोटिक एसोसिएशन का मतलब ये है कि यहाँ पे दो ऑर्गेनिजम्स रहेंगे, एक साथ रहेंगे अपने म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से, और दोनों को फ़ायदा होगा एक साथ रहने से। Therefore, the correct answer is option number C. The next question is, all the nitrogenase enzyme has been inactivated by the radiation. There will be no. The correct answer to this question is option number B, that is fixation of the nitrogen by the legumes. यानी कि अगर नाइट्रोजनेज एंजाइम अगर इनएक्टिवेट हो जाए ड्यू टू रेडिएशन तो क्या होगा, तो उस टाइम पे जो नाइट्रोजन है वो फिक्स नहीं हो पाएगी लेग्यूम्स की मदद से। इफ़ द रेडिएशन ऑफ द नाइट्रोजनेज एंजाइम इज इनएक्टिवेटेड then there will be no fixation of the nitrogen in legumes. The enzyme nitrogenase is necessary for the biological nitrogen fixation only. If it get inactivated by the radiation, the process of biological nitrogen fixation will be affected. The nitrogen fixation occurs through other ways also. So the either phenomena of the nitrogen fixation not stopped by the absence of the nitrogenase enzyme. Neither conversion of the ammonia to the nitrate, that is nitrification, nor the conversion of the nitrate to nitrite requires nitrogenase. Hence, they will not get affected. यानी कि अगर यहाँ पे अगर नाइट्रोजनेज एंजाइम है अगर वो रेडिएशन की इनएक्टिविटी की वजह से अगर वो इनएक्टिवेट हो जाता है तो क्या चीज़ नहीं होगी, तो जो नाइट्रोजन का फिक्सेशन है वो नहीं हो पाएगा लेग्यूम्स के थ्रू। यानी कि अब ये जो एंजाइम है नाइट्रोजनेज एंजाइम जिसके बारे में हमने ऊपर वाले क्वेश्चंस में भी डिस्कशन किया था, वो एक बहुत ही ज़रूरी एंजाइम होता है बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए। अगर ये किसी भी वजह से एंजाइम रेडिएशंस की वजह से इनएक्टिवेट हो जाता है तो जो बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन का जो प्रोसीजर है वो अफेक्ट होगा, और इसके साथ साथ जो दूसरे, लेकिन हो सकता है कि जो नाइट्रोजन फिक्सेशन है वो बाकी कुछ तरीक़ों से हो सके, लेकिन ये जो नाइट्रोजन फिक्सेशन का तरीका है लेग्यूम्स के थ्रू वो ज़रूर अफेक्ट होगा। The next question is, an element playing an important role in the nitrogen fixation is. The correct answer to this question is option number D, that is molybdenum. The molybdenum plays a very important role in the nitrogen fixation as it is a key element for the nitrogen fixing enzyme, that is nitrogenase, nitrate reductase and the nitrate reductase. It is present in the conjugated form with the ions and in these enzymes. Therefore, the correct answer is option number D. यानी कि जो मोलिब्डेनम है ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए, क्योंकि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एलिमेंट है जो नाइट्रोजन फिक्सिंग एंजाइम है, दैट इज़ नाइट्रोजनेज के लिए। नाइट्रोजनेज के लिए भी एक इंपॉर्टेंट की एलिमेंट है, इसके अलावा नाइट्राइट रिडक्टेज के लिए भी और नाइट्रेट रिडक्टेज के लिए भी ये मोलिब्डेनम बहुत ज़रूरी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द मैग्नीशियम इज रिक्वायर्ड फॉर। द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर डी, दैट इज सिंथेसिस ऑफ क्लोरोफिल। यानी कि जो मेनी एंजाइम्स इन द प्लांट सेल रिक्वायर मैग्नीशियम इन ऑर्डर टू परफॉर्म प्रॉपरली। हाउएवर, द मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल ऑफ द मैग्नीशियम is as a central atom in the magnesium in chlorophyll synthesis. The chlorophyll is a pigment that gives the plant their green color and carries out the process of photosynthesis. यानी कि जो बहुत सारे ऐसे प्लांट के अंदर जो एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं जिनको मैग्नीशियम की ज़रूरत पड़ती है अपना काम ढंग से करने के लिए, लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट रोल है मैग्नीशियम का वो आता है क्लोरोफिल मॉलिक्यूल के सिंथेसिस के लिए। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, the yield of the rice is enhanced by. The correct answer to this question is option number A,
that is azolla. The azolla enters into the symbiotic association with the nitrogen fixing bacteria known as the Anabaena. It is used as a biofertilizer to enhance the crop yield in the rice wheat cropping system. It is a small aquatic fern that can be used as a green manure for the irrigated rice before the transplantation of the rice and under the rice crop. Therefore, the correct answer is option number ए अजोला. यानी कि जो अजोला है ये नॉर्मली सिम्बायोटिक एसोसिएशन शो करता है नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया के साथ जिसका नाम है एनाबीना. और इसके अलावा ये एज अ बायो फर्टिलाइज़र भी इस्तेमाल किया जा सकता है जिसकी वजह से जो क्रॉप यील्ड है या जो क्रॉप की पैदावार है चाहे वो राइस हो या फिर वीट की क्रॉपिंग हो उसको इंक्रीज़ करवाया जा सकता है. ये अजोला एक बिल्कुल छोटा सा एक्वाटिक फर्न होता है जिसको हम एज अ ग्रीन मैन्योर भी इस्तेमाल कर सकते हैं जिससे पहले कि हम राइस का ट्रांसप्लांटेशन करें. Therefore, the correct answer is option number A. The next question is, which is the role of molybdenum? The correct answer to this question is option number A. That is nitrogen fixation. The molybdenum is an essential micronutrient, plays a very important role in the nitrogen metabolism and the protein synthesis in the plant. During the symbiotic nitrogen fixation, the molybdenum acts as a cofactor for the nitrogenase enzyme to catalyze the redox reaction to convert the elemental nitrogen into the ammonium ions. यानी कि जो मोलिबडेनम है ये एक बहुत ही असेंशियल माइक्रोन्यूट्रिएंट है और ये नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म प्लस जो प्रोटीन सिंथेसिस है उसके अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है. जब सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सेशन होती है तो उस टाइम पे जो नाइट्रोजनेज एंजाइम की ज़रूरत पड़ती है ये वहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा. और इसके साथ साथ ये जो रेडॉक्स रिएक्शन हो रही होती है जिसके अंदर जो एलिमेंटल नाइट्रोजन है वो अमोनियम के अंदर कन्वर्ट होती है ये वहाँ पे भी मदद करवाता है. The next question is, the conversion of ammonia to the nitrite by the microbe is. The correct answer to this question is option number A. That is nitrification. The ammonifying bacteria are those bacteria that convert the atmospheric nitrogen into the ammonia. These are also called as the nitrogen fixing bacteria, for example rhizobium or azotobacter. The nitrifying bacteria are those bacteria that convert the ammonia to the nitrite and nitrates to form the nitrate. The process is called as the nitrification. Example of nitrifying bacteria include the nitrosomonas, nitrococcus or nitrobacter. The nitrifying bacteria are those bacteria that convert the nitrates into the nitrite and the nitrite into the free nitrogen. Therefore, the correct answer is nitrification. यानी कि अब ये जो अमोनिफाइंग बैक्टीरियाज होते हैं ये वो बैक्टीरियाज होते हैं जो कि एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को अमोनिया के अंदर कन्वर्ट करवाते हैं जिनको हम नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरियाज भी बोलते हैं. इसका एग्जांपल है राइजोबियम या फिर अज़ोटोबैक्टर. वहीं अगर हम नाइट्रीफाइंग बैक्टीरियाज की बात करें तो ये वो बैक्टीरियाज होते हैं जो कि अमोनिया को नाइट्राइट के अंदर कन्वर्ट करवाते हैं और फिर नाइट्राइट को नाइट्रेट के अंदर कन्वर्ट करवाते हैं. अब ये जो पूरा प्रोसीजर है इसको हम बोलते हैं नाइट्रिफिकेशन. और जो इसका एग्जाम्पल है वो है नाइट्रोसोमोनास बैक्टीरिया और द नाइट्रोबैक्टर बैक्टीरियाज. इसके अलावा जो डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरियाज होते हैं ये वो बैक्टीरियाज होंगे जो कि नाइट्रेट को नाइट्राइट के अंदर कन्वर्ट करवाएंगे और फिर नाइट्राइट को फ्री नाइट्रोजन के अंदर कन्वर्ट करवाएंगे. इसका एग्जाम्पल हो सकता है माइक्रोकोकस या फिर डीनाइट्रिफिकेंस. लेकिन जो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा वो होगा नाइट्रिफिकेशन क्योंकि जो नाइट्रिफिकेशन है ये एक ऐसा प्रोसीजर है जिसके अंदर जो अमोनिया है वो नाइट्राइट के अंदर कन्वर्ट होता है. The next question is, the necrosis of the tissue, particularly leaf tissue, is due to the deficiency of. The correct answer to this question is option number B. That is calcium, magnesium, copper, sulfur, molybdenum and potassium. The concentration of the essential elements below which the plant growth is retarded is termed as the critical concentration. The element is said to be the deficient when the present below the critical concentration. Hence, each element has one or more special structural or the functional role in the plant. So, the plant certain morphological changes in the limitation of any particular element. These externally visible morphological changes which are produced due to the absence or the deficiency of the essential mineral element are called as the deficiency symptoms. The necrosis is a common deficiency symptom. It refers to the death of the tissue, particularly leaf tissue, and it is caused by the deficiency of Ca, Mg, Cu and K. यानी कि वो कॉन्सेंट्रेशन किसी भी एसेंशियल एलिमेंट के जिसके नीचे जो प्लांट की ग्रोथ है वो रिटार्ड हो सकती है उसको हम बोलते हैं क्रिटिकल कॉन्सेंट्रेशन.
और ये जो एलिमेंट है ये अगर डेफिशिएंट होते हैं, डेफिशिएंट माने जाएंगे अगर ये क्रिटिकल कॉन्सेंट्रेशन से नीचे प्रेजेंट है तो। और ऐसे टाइम पे जो प्लांट है वो अपने अंदर कोई ना कोई मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस ज़रूर लेके आता है ये डेफिशिएंसी को शो करने के लिए। अब ये जो होंगे इनको हम बोलते हैं डेफिशिएंसी सिम्टम्स, यानी कि प्लांट जो भी कोई मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस लेके आएगा उनको हम बोलेंगे डेफिशिएंसी सिम्टम्स। जो नेक्रोसिस है ये एक बहुत ही कॉमन डेफिशिएंसी सिम्टम है और इसके अंदर नॉर्मली जो टिश्यूज़ है उसकी डेथ होती है, पर्टिकुलरली अगर हम लीफ टिश्यू की बात करें तो। और नॉर्मली ये कैल्शियम, मैग्नीशियम, कॉपर वगैरह की डेफिशिएंसी से होता है। एंड द लास्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए माइक्रोन्यूट्रिएंट? द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर ए, that is phosphorus. Therefore, these were some of the very important MCQs regarding this chapter that are important from the NEET and AIIMS point of view. So if you have liked our video, then please do not forget to like, share and subscribe our channel, because your every subscription matters to us a lot. And you can also tell us your views in our comment section. Thank you so much.